Jai Gurudev everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Guru Puja followed by a Yog Vaashishtha system. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से गुरु पूजा के इस सत्र में स्वागत करता हूँ। इसके बाद हम लोग गुरु पूजा के बाद योग वाशिष्ठ का सत्र यहाँ पे शुरू करेंगे। आज हम लोग गुरु पूजा के करीबन 53वें दिन और योग वाशिष्ठ के 34वें दिन पे पहुंच गए हैं। सो रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके आज के सत्र की हम लोग शुरुआत करेंगे। लेट अस ऑल क्लोज अवर आइज। अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर लें और छोड़ दे। गुरुदेव कहते भूतकाल त्याग करने योग्य है। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते अपने भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। यह वर्तमान क्षण नया है। इस नए क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। ओम का नाद करने के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले। गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम 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 पुनः पुनः गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले। अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत हो रहा विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, और यदि अब भी अहम का थोड़ा भाव बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुमुक्षत्व की राह पे चलने वाले हम लोग, मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग, यदि इस क्षण मुक्त हो जाए तो उर्वरित जीवन, और यदि किसी कारणवश गुरु का बुलावा आ जाए, यहाँ पे लौट के आना पड़े, तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually you may open your eyes.
फिर से एक बार अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का स्वागत है। आज हम लोग जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट द कृष्णा कॉन्शियसनेस डाउन इन यू। तो गुरुदेव ने बोला ना सत्संग में, कृष्णा हवेली में नहीं रहते, कृष्णा तो आपके हृदय में बसते हैं। तो उस कन्हैया, वो कन्हैया कॉन्शियसनेस को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के अपने गुरु पूजा पंडित संगीता जी अपने साथ जुड़ चुके हैं। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज के सत्र की शुरुआत हमें गुरु पूजा से करने मिल रही है, तो बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुरु पूजा के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। जिनका गुरु पूजा पंडित का कोर्स हो चुका है वो आके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप संगीता जी से संपर्क कर लीजिए और आप भी आके संगीता जी की तरह यहाँ पे गुरु पूजा परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आपका गुरु पूजा पंडित का फेज 1 हुआ है, जीपी फेज 1, तो आप चैंटिंग कर सकते हैं। परफॉर्म तो नहीं कर सकते आप, लेकिन जस्ट चैंटिंग आप जरूर कर सकते हैं। दोनों भी नहीं हुआ है तो गुरु पूजा फेज 1 या फेज 2 करने का संकल्प मन में ले ले। और आज के लिए इन मंत्रों का स्नान करते हुए हम लोग ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। So over to you, Sangeeta ji. Kindly walk us through Nari Shodhan Pranayam, and then we can begin with today's Guru Puja. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Welcome all of you and happy Janmashtami to you, all of you there. We will start our Guru Puja by doing Nari Shodhan Pranayam, that is alternate nostril breathing. So left hand on the chin mudra, on your lap, with the 2 fingers in between your eyebrows. Start with your Nari Shodhan Pranayam. And whenever you complete this round, you may relax, keeping both your hands on the lap, eyes closed, relax, and we will start. Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyama Asmad Shri Guru Pariyanta Vande Guru Parampara. Apavitra pavitro va sarva vasta vato viva yasmade pundali kaksham sabhasa santarashichihi avahan. Narayanam Padmraja Saraswati Shakyam Satatputra Parasharanja Vyasam Shukam Gaurapadam Mahantam Govinda Yogendra Mata Sashisham Shri Shankaracharya Madhasya Padma Palanta Hastamara Kanta Shishya
तन्त्रोतकं वाधिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽपि श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादनायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः यद्द्वारे निखिलानिलिम्बपरिषत् सिद्धिं विवक्षे निशं श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं तका लोकाज्ञानपयोदपादनतुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्द सरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षर्तां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। आरतिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। Slowly and gradually, whenever you feel complete, with a gentle smile on your face, you may open your eyes. तो आज का भी सेशन बहुत बहुत बढ़िया था संगीता जी। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग अस विथ एवरीडे गुरु पूजा। हम लोग रोज गुरु पूजा का सत्र करते हैं। रोज आप हमारे साथ 7 बजे जुड़ सकते हैं इसी लिंक पे। तो अभी हम लोग योग वशिष्ठ की शुरुआत करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो अपना यह योग वाशिष्ठ का जो जर्नी है, that journey has reached to day 34 today. We are going through something called as Utpatti Prakaran, creation of this universe. This is chapter number 3. So this is where Vasishtha Muni starts giving Prabhu Ramchandra ji the more insights about how this entire creation is created. किस तरह से इस पूरे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो हमने देखा कि वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को आत्मज्ञान यहाँ पे देते हैं। And then to explain that further, he keeps on telling a story inside story, story inside story, multiple stories of we are going through Mandapa Akhyam, something called as Rani Leelavati and Padmraja and Saraswati. So there is a story of this. So there is Leelavati and Padmraja who are happily married and they are living their life happily. So one fine day, Leelavati just starts worrying that what if this situation does not continue. So she prayed to goddess Saraswati. Saraswati goddess gives her 2 boon that her soul of her husband will not be able to go out of this form. And the second boon she does that whenever she remembers me, I will be there with you to guide you further on this path. So after some time, Padmaraja passes away. And according to the guidance from Saraswati, she covers the body into the flowers
the bed of flowers. And she learns a few techniques. With the help of that, she is able to transcend his body and able to travel through her subtle body into the Chidakash. So that is exactly what she does. She travels to the Chidakash, and there she finds that the Padmaraja has already taken a birth in his own Chittakash. He has imagined the birth, and he is now 16-year-old king and ruling the world kingdom. So she comes back there. She founds the multiple other mantris and ministers also. She comes back to her own place where she has traveled so for her Padmaraja's kingdom. She finds that everybody is there. No? She's just confused that what is this going on. So she calls upon Saraswati and start asking her multiple questions. And the ways we have seen how Saraswati, goddess Saraswati, keeps on guiding her, how she shows her past birth of Vaashishtha Brahmana and Arundhati, and then how she teaches her the real Atmagyan, real story, how this birth after birth just happens in the Chitta Akash of every individual. They create their own Brahman, and within that they start living their next life. So while this journey continues, after some time, then she sees the entire universe, how this entire Chidakash looks like. Very beautiful description of that is also follows. So after that, she now asks Saraswati, now I want to see what is happening in my husband's world, that Chittakash. So she happens to go there. There she see that Sindhu Raja and Vidurat, he has now taken birth as a Vidurat. So Vidurat, they are in front of each other, warlike situation is there. And finally, when war starts, the Vidurat comes back to his palace and sleeps. So then after that, both of them enters into the hall of Vidurat. So look, by that bright light, Vidurat gets out, comes out of his sleep, and then he sees both of them. And now he sees that how come this is possible, and he asks for the blessings and he asks for the knowledge. So Saraswati tells him, reminds him of his birth, and he asks that, okay, after this birth, probably I want to go back to Padmaraja's that kingdom. So she says, Tathastu, why? So while all these things were going on, there comes the one sevak, and he asked that there is warlike situation has happened. You'll have to come along. And then Vidurat Raja goes, and then comes the wife of Vidurat. So Vidurat Patni is also exactly like Leela. So when she comes and she hears about this conversation, she also is a devotee of Saraswati. So she asks for the boon, if at all this happens, that my husband Vidurat Raja is, as he has asked you the blessing, if he passes away from here to that world, that Brahman, I also wants to be with him. So she blesses her also. So now this Leela, the Padma Patni Leela, the wife of Padmaraja, she is now confused that when I asked you certain things, you asked me to be into the body and travel like this with the subtle body. When she asked, you are allowing her to go there. How is that so? So see, Saraswati, who am I to give anything to anybody? Whatever you ask, you pray, I give. My work is only to give. Whatever you pray, you ask, I give to you. It is your own will wish. What is that you ask me? I gave you that. You asked me that Atma Jnana, I gave you that. So you are able to be with me all the time whenever you want. She asked for what she asked, she got. Whatever Padmaraja asked, he got. Whatever the Vidurata asked, he got. So like that, she keeps telling all these things. So it is our prayatna, our purusha, and our prayer, that is what we ask manifest. That is what is the message that we learn from you. Then what happens that when all these things continues, and finally they just that all these things are actually happening in the Vaashishtha Muni's house. There itself there's multiple Brahmanda exist. They give an example of, just like there is a this banana thing will be there, no? So you just keep on opening the leaf after leaf. Again you'll find one more. Again you open, again you'll find one more. So it's exactly like this, no? This Brahmanda inside, Brahmanda inside. So all this Chitta Akasha just creates in the Chida Akasha. So that is how it is explained over here. No? So now this Rani,
that Leelavati Rani, that what happens that then this in this war, finally Vidurat Raja gets killed and his soul kind of now want to travel there. So before that, even this Vidurat Patni Leelavati, second Leelavati, she travels so with she's Murcha Jatyampu, she's gets into, she actually dies, and then her body, subtle body, travels to via Ati Vahik Sharir. She travels over there, and then she is sitting next to the Padmraja, and then she is giving him the air, Hawa deti unko. So that is what the story continues. Now, as this whole thing has gone through the death experience of multiple people, here comes the next story, that Leelavati Katha number 9. That is where they explain the death in detail. Maranacha Anubhavan, what is the death experience, and what happens to the people after death, which many of us are being very curious about this subject, that how the death comes, when the death comes, how many number of years one can live, what happens at the time of death, what happens after that. So multiple questions do come in our mind, however, and we are looking for an answer. So this is where this is been explained in detail here. Now there is also another holy scripture called Kathopanishad, and in Kathopanishad also there is a story of Nachiketa, and he also experienced the near death experience, and that is also what happens during death, what happens after death is explained in detail. So if you feel like, if you want to go further details into it, you are welcome to go through the Kathopanishad. That will also give us much more insight. Let me just show you that book just as a reference. So this is the book. It's by Gurudev, Kathopanishad. There is a CD also, so you can buy this, and then you will be able to go through the details of this. Now let us see what Yog Vaashishtha says about it. So when he say that it actually travels from that one Brahmanda to another Brahmanda, how it exactly travel? That we are living here as a Bhu Mandala. So there are different mandalas. There are different auras that are explained here. So outside Bhu Mandala there is a Chandra Mandala. Outside Chandra Mandala there is a Surya Mandala. Outside Surya Mandala there is a Indra Mandala. Then there is a Brahma Mandala. There is a Vishnu Mandala. Like this, there are multiple auras present in one Brahman, one Chittakar. And after above all these things, there is a Chittakar. Okay, so like this one Brahman in Chittakar, there are multiple such Brahman. Means every individual Chitta yes create its own Brahman. Means whatever happens in the Chitta, exactly that is what is reflected as a solid. Now this concept is very revolutionary. That what we think, whatever is happening outside, through our Panchendriya we perceive it, and then in our Chitta it manifests, or the thoughts comes like that. Here Yoga Vaashishtha is telling us exactly opposite, that it's all actually happens in your Chitta first, then from your Chitta it all manifests outside. That is very revolutionary concept. So whatever happens within you, accordingly you project the things. So whatever is happening, good or bad with you, it is actually your Chitta is actually perceiving that thing like that, so it happens to us. That is something which one conclusion that could be taken away. So if you want to modify something outside, where do you need to modify? You need to modify. Aksar, that's what the mistake that we do. We want to modify everybody else around us. No, you do this, you're not doing sadhana, you're not doing this, you're not doing satsang, you do this. Always telling everyone around us to do something. Here they are saying, if you want the characters which are there in your Brahmanda to behave in a particular fashion, you change it within. In the Chittakash you change, their behavior will automatically change in the external world also. Such a nice insight, such a nice gyan, very, very good insight. So amazing. So that is one insight that we get to learn. These are all auras that exist. In one Chittakash, it all exists, and there are multiple such unginat as a Chittakash in the Chidakash are there.
So Bhuta Akash, Bhumandala, Bhuta Akash, then the Chitta Akash and multiple Chitta Akash in one Chida Akash. So that's the concept here. So now when she does this, and this Leelavati, Padmraja's wife, she says that, okay, what you told that this Leelavati travels there and she sits there. Come on, how is that possible? Like, not possible. How, even if she goes there, she believes that, okay, she goes through some way and she's there. What about the laborers and the other Sainiks and the ministers? Will not wonder how come she is there? So here Devi Saraswati tells her that, look, for them, no, these are all normal people. They don't have that awareness. No? They will just see that, okay, that Leelavati is there, and they will celebrate, and they will just continue to accept her as a queen. And that is what exactly happened. Now these things are detailed, explained in the story going further. No? We are not touching that. Right now we are looking into the death experience, before death, why death, at the time of death, and what happens after death. So that is what we are right now continuing. So then Saraswati explains that this is worth learning how to transcend this body and get into the subtle body. So Saraswati is telling that with practice, you will be able to learn this. Now that is what we learn. We when we go deeper into the meditation, and Gurudev many times conducts the meditation and he says, okay, now you feel your mind is expanding. What is that all happening? He's actually making us drop this body, is making us drop the other layers, and then even mind also it drops, and then Vigyan, that Manomay Vigyanmay Shri also, he explains the bliss, right? So he makes us travel. This Sukshma body, subtle body, he makes us travel. See, you're now bigger. No, so very beautiful concept. So it says that it's worth learning to drop this body. Dropping this body doesn't mean die. No, dropping this body means get into the subtle consciousness. That is the subtle level. So then once you learn that, you get access to that subtle energy, which is much more bigger than what we can do physically. At that layer, you can do much more than what we can do physically. No, let us understand this. This is another very beautiful knowledge point here given, that अक्सर हम लोग कुछ भी चीजें physical level पे करना चाहते. Here Vaashishtha Muni is telling us that, look, if you learn how to act at the level of that sukshma, that subtle, then you will be able to do even much more. Now Gurudev operates on such level. If you listen to Kashi Bhaiya, अक्सर बोलते हैं कि चेतना के स्तर पे, संकल्प शक्ति के स्तर पे जो काम होता है वो अलग ही होता है. उसकी झलक हमें यहाँ पे इस ज्ञान के थ्रू मिल रही है कि किस तरह से one can experience that subtleness, that sukshma ativahik body, subtle body. And if we work on that level of chitta, then you can actually make many changes. Not only in your life, you can actually go ahead and change the make in many other people's life also. Make them also come on this path, make them also. गुरुदेव ने कहा ना, आज 56 भोग तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ज्ञान भी इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए गुरुदेव ने बताया कि आज से या कल से start reading भगवद गीता, be in that knowledge. Now other things are important. This is much more important. Food is important, no doubt. 56 भोग आपने लगाया, बहुत अच्छा. 5600 भोग जो भी लगा, बहुत अच्छा. But then वो भी तो भोग लगाओ. The divine, the guru, the divine sees you much more happier when you have that light of knowledge dawning in you. जब आप ज्ञान में आते हो, आपके अंदर से वो मुस्कुराहट, आपके अंदर से वो प्रेम ऐसे झलकता है, आनंद झलकता है. Divine becomes more happy, not just by offering this thing here. Now that doesn't mean that it's not important. It's also important. This is more important to get us into discipline of puja, all these things, this karma kanda are important, no doubt about all this. So we are not discarding them, but we are saying yes, they are also important. This knowledge is much more important.
No? So that is what exactly we are all are here. We come here, try to get more insights about our own existence. I think more subtler and subtler, and no, a petal by petal, we are Vashishtha Muni is opening that petal by petal and getting us more deeper and deeper within. Hmm? So that is what she tells, that actually she travels through this Ativaik Sharif, through Sukshma Sharif, she travels over there, and that is how from one Brahmanda to another Brahmanda she travels, and then gets into the Brahmanda of Padmraja, that thing, and then she goes there, and that is how it all happens. Hmm? So then, who can experience this? So she's explained the pure soul like you, the one who pray with that fullness of heart. Once so much devotion is there, and then once you start walking on this path of dharma, then probably you learn this. No, that siddhi comes to you. So that is very good. And then you'll be able to drop this. Ki, I am this jad deha. I am this body. That feeling, that bhavna, that drops. And then once that drops, all obviously all associated vasanas, no, this vishaya and kama, krodha, lobha, mada, moha, matsara, all these things, greed, more entanglement, all these things, with the feeling of dropping this body, even that also drops. Now what remains is the subtle. You will be able to operate with that subtle body. Then you can go. So when it says that all these things come, that whenever I give any blessings to such people, she says that everything I just bless. But then even that blessing and that thing also comes because of their past karmas. They probably have done that kind of karma, so I bless them. So here they are not neglecting the power of Purusharth, the power of doing their karma. That is also not neglected here. It is depends upon your karma, the what kind of karma you keep on doing it. Based on that only, even the God, even the Saraswati, Devi Saraswati blesses them. That is what she tells. So that's very, very nice. So then she says, oh, what happens to the body? She actually questions this, Leelavati. Actually, it is explained in detail in the future story also, but I'm just touching upon. She asks actually, see, you asked me to travel through a subtle body, but then I was there in the body, right? So I am sitting there meditating, and then my Ativaik Sharir is out of the body. I'm traveling with you. Then what happens to that? How come that is? All these things questions, Leelavati question. So the answer for that comes in a detail in a later story. So just keep this as a part, this as a question. What happens to the body of Leelavati number 1? Then she also says that what happens to the other bodies and all these things. When, how come she travels through body? No, she says that this other second Leelavati, Vidura Patni, travels through body. So she says that it's not her body travels, it's the subtle body that travels. But just because it is just like this body disappear over here, I mean this body appears. It's just like she is giving an example of the snake, how the snake appears in the when there is no light, and you think that snake is real, and whatever the things that it appears that it's moving. Similarly, this all the body, all its action, whatever it does, it just disappears the moment the light comes. No, it dawns, the light comes, snake disappear. So similarly, this body consciousness disappear. So then how does it matter what is body, and when it appears, disappears, it doesn't matter. That is the reason he said the one who is Siddha, the one who is Mukta, no? The one who has attained that liberation. For them, what happens to this body is immaterial to them. It doesn't matter Sukha, Dukkha, and pain and Harsha and all these things. It doesn't matter to those who are Mukta. So now comes the explanation, detailed explanation. What is this death experience is? How this death actually comes. No? So here the question is raised, like even though we say that okay, there is a death and there is a death experience, just like this birth itself is not real, it's unreal. Even the experience of death is also mithya only, it's unreal. So even the concepts of this death and birth, that is also just because of the
past experience, no, the way people experience their past, based on that only they start imagining their present. Just again in a chitta akash. So that is what is explained here. So this, once the one who is able to remain tatastha sthita pragya, he is aware that outside and inside, no, bahir and outside, it is actually the same thing. No, there is no difference between both of them. So this, what happens exactly when the death happens? This Leelavati is asking, Goddess, kindly explain me what happens to this jiva. When a person dies, where does this jiva goes? What happens to it? No? What is it's all this prashna that she asks. So she now, Saraswati, is giving all this knowledge to Leelavati, how exactly all these things happens. No? So she explained there are 4 yugas that are been saying, no? Krita Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. Now, according to these 4 yugas, the life of the human being is pre-decided. No, it is 400 years, 300 years, 200 years, and this Kali Yuga, it is 100 years. So that is what one concept that has been introduced, that your lifespan is dependent upon the yuga in which you stay. It has also been said that your lifespan also depends upon your karma. So the people who are involved into bad karma, the nishiddha karma, no, they are not taking care of their body, they are not taking care of their daily routine, they are not in knowledge. No, all such people's life also can further reduce. Then it is also said that we observe that some people dies in a very early childhood. Some people died in the yauvan, means youth, and then some people died in the old age. Why is so? Why these 3 type of there? So it is explained here that this also depends upon purva sukrut, no, purva past experience, past karmas. And because of that only somebody have to leave this body early. So that is also explained here. Then also they introduce these concepts of this desh, kal, and vartan. It depends upon that. So desh, kal means the place where you are in, kala means the yuga where you are in, and then your vartan. Your vartan means your karma. So your mrityu depends upon that. We have seen that, remember that story of Akashaj, that Akashaj has no death. Why? Because he is not doing any karma. Although he is doing action, no impressions are getting created. There is no karma that is happening. So because of that, he does not have that. So why we die is purely because there are some karmas that are happening, either good or bad. If you do the good karmas, after that you experience a particular experience, anubhav, and if it is bad, then you experience the other type of experience. That also in detail it is explained here. So the first thing that is explained here, that is this saransh, the moral here is that the person's life is dependent upon these 3 factors. No, that is said. So the prime important is that factors also include the praktan, means the current karmas, and also the sanchit, the past karmas. Cumulative effect of that is the death comes. That is based on that the death comes. Now what happens when the death comes? Now is that it depends upon what kind of person is experiencing that death. Based on that, either they will experience the sorrow. So Leelavati asked this: what happens when people die? Do they have the same experience? Everybody has the same experience, or that experience is different in case of different people? So here Saraswati is explaining there are 6 types of people on an average. There are 6 types of people. The people who are involved into punya karma, there are 3 types, and there are people who are involved into sinful life, papa karma. There are also 3 types of people. So there are some samanya punya karma, there are madhyam punya karma, and there are mahat punya karma, maha punya karma, and there are some people who are doing some bad things. There are people who are doing much more than that, and there are some people who are mahapapi, means they are completely involved into very sinful activities. Now depending upon what they do in their life, depending upon they experience the thing. Also it is explained that there are 3 types of people. No,
So the one person is the one who is the normal human being, Samanya Purusha. The one who is who has been constantly doing this yoga abhyasa, and the one who is already siddha, the one who has already attained. No? So we say these two type of people, those who are continuously in nididhyasa, the people who are practicing this, how to meditate, how to drop this body, how to experience the subtle. For them, when the body is dropping, it is not that painful, or even if it is, it doesn't matter to them. No, so they can just live happily. They don't get that much of death experience that is in the form of pain. It's not very painful for them. No, but the one who is this normal human being, the usko murkha bola actually, the one who is a fool. Now for them it is very, very difficult. These yatnas are very difficult. So what happens at the time of death? So he says that the entire nadis, there are so many nadis, 72,000 nadis. There are so many nadis here. So entire that prana shakti withdraws from all the nadis and it travels towards your heart. Now what happens? It is just like there is a scorpion, and if that scorpion is biting, thousands of scorpions are biting, how much pain will you get? So the person experience that kind of pain. No, when this happens at the time of death, they experience all this pain in their chest, and then all these things happen. Then they also explain that slowly and gradually, the way this creation we have seen. No? So similarly, just like that, all the other things happens. Your body becomes numb. No, your sensation goes. Then the first thing is that is explained here is that what happens, that the first thing you'll go into you will lose this sense of test. Your test will go first, because that is related to earth element. Test will go first. Then the second thing that will go will be your sense of test will go. Then the Jala Tattva. Jala Tattva is basically it's related to sense of sparsh. Sparsh will go. The sense of touch will go. Then after that sense of touch, then your sight will go. No, the sight is basically fire element. The fire will go. Then the smell, that is Vayu element. The next one is Vayu. So then your sense of, the last is sound. No, sound is here. Yeah, that's correct. So the sense of smell will go, and in the end, the sense of hearing, that is sound. That is Shabda. Shabda means Akasha level. No? So you have seen that, no? So the space is there, then the air element is there, then after that fire element is there, then after that the water element is there, and after that water element there is the earth element. So all these 5 elements are associated with the 5 senses also, and based on that, this other shaktis, no, the sense of taste, sense of touch, sense of sight, then sense of hearing, and all these things. No, all these things they also follow the same thing when we actually disappear into this. So that is how the sequence of the death that is been explained. And because of all these things, if you see, there are all these other rituals and all that, for some few days that Atma, that Jivatma is still there, in that. So that is the reason they perform all the rituals and all that. So there is a significance of that also. No? So whatever the things that we perform, we give all the other things, whatever the rituals that we do perform, that is also important, because that soul is still able to experience for some time. They are able to, in the end, that sense of hearing goes. So that is all is been explained here. So that is the death experience. Now what happens when someone dies? Now after that, they explain that depending upon that, they either experience the Swarga Sukha, the heaven, or they experience the Narak, the hell.
So now depending upon what this they have done, this Samanya, medium and Mahapapya, this Samanya, medium and do these things, other things. So based on that, they will be experiencing this. So they're the one who is done the very good karmas. They have been always walking on this path. They have been in knowledge and all that. They experience the Swarga. When they go to the Swarga, depending upon type of that, they experience the Swarga also. Now then other people, what they do, they go, and once that is Swarga is finished, they come back and they become Yaksha, Kinnara, and all these different units. Finally, they come back to the Manushya Sharira. So that is what the sequence is explained. So for the other people who are of the medium, they go and experience for some time. They experience the good thing. They go into different units, but not too many. They again come back to the news. The one who is experiencing this, the one who has done this lot of sin, they actually go through a lot of trouble. They first experience that naraka and anubhava of that naraka. Then after that, they also have to go through even the stone as a stone or non-living in that form for a longer time, suffer. Then they get into all the other bodies. Those yonis, they are called different lives. So they have to go through that, and then finally, sometime after doing all these things, they may get the birth of a human being. So that is what happens after death. So that is very well explained here in detail, what can happen with a person when they go through this experience. So then the rebirth, that process is also explained, that when this sukshma sharir, that jivatma is like a vayu, is like just air. What it happens first, it through the parjanya shakti, parjanya means the water element, that vayu element, through the water element, it enters into the dhanya, this food, that's different plants. That plant is what we eat. We eat this, we eat this rice and all that. So that comes to the body, our body, in the male body as well as in the female body. And then from there, it takes that, it becomes more gross, and that is how it enters into the mother's womb. That sperm enters into the mother's womb, and that is where the life gets formed and it takes the birth. So even that process of birth is also explained only. So then after this, that particular chapter, the 9th chapter, that comes to an end, and Leelavati asked the question that I heard that there is in this Mahavakya, this is Tat Tvam Asi. So what is it, that Tvam? That is what the question Leelavati asked there, and that is what the explanation of that will come into the next chapter. So we'll see that chapter tomorrow. अभी हम लोग इसका थोड़ा सा हिंदी में रूपांतर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कहा गया है. तो हमने देखा कि जो वशिष्ठ मुनि जो है, तीसरे प्रकरण में हम लोग पहुंच चुके हैं. उत्पत्ति प्रकरण यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि यहाँ पे ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं. तो उनको आत्मज्ञान देते हैं, और उस आत्मज्ञान को समझाने के लिए वशिष्ठ मुनि जो है वो यहाँ पे उनको लीला सरस्वती और पद्मराजा की कहानी सुनाते. तो पद्मराजा और लीलावती जो अपने बड़े सुख से अपना जीवन कंठित करते रहते हैं, और फिर कैसे उसको आगे बढ़ाते हुए उनको चिंता होती है, वो सरस्वती की प्रार्थना करती है, सरस्वती उनको वरदान देती है, वो अतिवाहिक शरीर से ट्रैवल कैसे करना सीख लेती है, अपने राजा का नेक्स्ट बर्थ देखती है, लौट के आती है, फिर सरस्वती के साथ अपने पुराने बर्थ में जाती है. वशिष्ठ मुनि नहीं, वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति, उनका जन्म भी वहां पे दिखता है. उसके बाद फिर से रिटर्न आती है, फिर जो अपने पति के अगले जन्म में जाती है सिंधु राजा, और जो अपने विदुरथ राजा, उनका भी वहां पे संघर्ष होते दिखती है. विदुरथ राजा अपने महल में लौट के आता है, वहां पे ये दोनों के दोनों सरस्वती और लीलावती वहां पे सूक्ष्म अतिवाहिक शरीर से उनके महल में प्रवेश करते. वहां से आज की अपनी कहानी यहाँ पे शुरू होती. तो जब वहां पे जाते हैं तो जो उनका जो प्रकाशमय स्वरूप होता है, उसकी वजह से जो विदुरथ राजा है उनको उनकी नींद खुल जाती है. वो देख के उनको प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं. तो जो चाहते हैं कि उनको जो फिर ज्ञान हो जाता है
कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ, तो फिर मानते कि जैसे मेरा यहाँ पे ये जन्म खत्म हो जाएगा, आई वॉन्ट टू गो बैक, मैं वहां पे अपने शरीर में, पद्मराजा के शरीर में लौटना चाहता हूँ, वैसा आशीर्वाद दे। तो सरस्वती उनको वो आशीर्वाद दे देती है। तो ये सब कुछ सुन के जो उनकी पत्नी रहती है वो भी एग्जैक्टली लीला की तरह ही दिखने वाली होती है। तो वो लीलावती यहाँ पे प्रश्न पूछती है कि मेरे पति ऐसे चले जाएंगे, तो मैं भी तो आपकी बहुत बड़ी डिवोटी हूँ, भक्त हूँ, मैंने भी आपकी काफी पूजा वगैरह की है, तो आप कृपया मुझे भी ये वरदान दें कि मैं अपने पति के साथ ही पद्मराजा का जो ब्रह्मांड है उसी में मैं भी जा सकूं और मेरा वहां पे उनके साथ जन्म हो। तो उनको भी वो आशीर्वाद दे देती है। तो ऐसे करते करते विदुर राजा की मृत्यु हो जाती है। तो फिर वो भी उनका भी शरीर मृत हो जाता है, मूर्छित हो जाती है, और सूक्ष्म वाहिक रूप से वह इस ब्रह्मांड से लेके अगले ब्रह्मांड में जाके, वहां पे जाके जो उसका बॉडी रहता है पद्मराजा का, उसके साइड में जाके उनको हवा देते रहती। ऐसा यहाँ तक बताया गया। लेकिन इसके दौरान जब बात चलती है डेथ की, मृत्यु की, तो यहाँ पे मृत्यु का भी वर्णन किया गया है। और जो सूक्ष्म अतिवाहिक सूक्ष्म होता है उसका भी जीवन में अपने कितना बड़ा महत्व है, ये ज्ञान हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है कि किस तरह से कोई भी अपना ये जो शरीर है, जो हम लोग इस शरीर को ही अपना अस्तित्व समझते हैं कि मैं यह सिर्फ शरीर हूँ, तो क्या मैं सिर्फ शरीर हूँ? यह ज्ञान भी हमें यहाँ पे मिलता है कि नहीं, आप यह सिर्फ शरीर नहीं हो, आपका और भी एग्जिस्टेंस है। आप अति उस सूक्ष्मता को जब आप पा लेते हो ध्यान के जरिए, सुदर्शन क्रिया के जरिए, गुरुदेव ने जो जो भी हमें टेक्निक सिखाया उसके जरिए, प्रैक्टिस से आप जो उसको प्राप्त कर लेते हो, तो आपको इस शारीरिक लेवल पे जो शक्तियां उपलब्ध होती है उसके कई गुना ज्यादा अनगिनत शक्तियां सटल रूप से आपके पास उपलब्ध है। उन सारे चीजों का एक्सेस आपको मिलने लगता है। ये बड़ी ज्ञान की बात यहाँ पे बताई गई कि वह वहां तक पहुंचना वर्थ है। तब आपका जीवन का पोटेंशियल जो आप अनलिश कर पाओगे, और भी ज्यादा पोटेंशियल अनलिश कर पाओगे जब आप उस अंदर जाते हो। उस शक्ति का स्रोत, जो प्रेम का स्रोत, आनंद का स्रोत है, वहीं पे जब हम लोग उसका ही जब अनुभव करने लगते हैं, तो ये सारी चीजें आपके जीवन में ये उपस्थित होती है। तो बोलते किसको मिलता है? तो बोलते तुम्हारे जैसे जो पवित्र आत्मा होते हैं, जो सात्विक होते हैं, उनको यह शुद्ध तत्व में अपना अनुसरण करते हैं, उनको यह प्राप्त हो जाता है। इस तरह से लीलावती को सरस्वती देवी बताती। इससे यह भी होता है कि जब अपने शरीर में नहीं हो, तो इस शरीर से जुड़े हुए वासनाएं जो होती है, जो शरीर जो हमें तकलीफ देते रहते हैं, वासनाएं जो बाहर हमें भटकाती रहती है, बोलती है उसका भी, वो भावनाओं का भी यहाँ पे ये हो जाता है, नष्ट हो जाती है, उसके साथ वो भी ड्रॉप हो जाती है। तो बोलती ये भी, लेकिन जो मैं उनको ये जो श्राप मिलता है किसी को, या किसी को वर मिलता है, ये भी तो हम लोग देते हुए तो दिखाई देती, लेकिन ये भी उनके कर्मों के ऊपर ही होता है। ये भी यहाँ पे सीख हमें दी जा रही है कि ये जो सारा जो देता है वो कर्मों से ही प्राप्त होता है। तो अपने पुरुषार्थ को ड्रॉप करने को नहीं बोला है, अपने कर्मों को यहाँ पे कंटिन्यू करने को बोला गया। तो वो वहां पे भी प्रश्न पूछती है कि अरे मैं तो फिर इधर आ गई, मेरी बॉडी वहां पे थी, और ये कैसे गई सूक्ष्म देह से, इसकी बॉडी कहाँ से आप हो गई? तो बोलती वो जो बॉडी का, शरीर का रूप का जो अस्तित्व होता है, वो जस्ट कोई अंधेरे में जो सांप दिखाई देता है उसके जैसे ही होता है। जैसे ही सुबह हो जाती है वो सांप नहीं होता है, तो क्या पूछते हैं कि उस सांप का क्या हो? उस तरह से ही शरीर रूपी इसका कोई महत्व नहीं रहता है जब कोई इंसान सूक्ष्म लेवल पे एक्सेस मिल जाता है। तो यही चीज हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। अभी लीलावती यहाँ पे प्रश्न पूछती है कि यहाँ पे जो डेथ की बात हो रही, तो एक्चुअली लोगों को डेथ कैसे मिलती है, और लोगों को डेथ मिलती है तो उनको इनका क्या अनुभव होता है, मरण के वक्त उनका क्या अनुभव होता है। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो गुरुदेव का यह बुक है कठोपनिषद, तो यहाँ पे भी इसका डिटेल में वर्णन किया है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो यदि आपको जानना है। यहाँ पे वो नचिकेता की कहानी यहाँ पे बताई गई है, वहां पे भी इसका सुंदर वर्णन है, कि क्योंकि बहुत क्यूरियस सब्जेक्ट होता है हम सबके लिए, सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे भी इसका वर्णन है, कठोपनिषद में भी वर्णन है। तो यहाँ पे जो योग वशिष्ठ का जो वर्णन किया गया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा भी देख लेते हैं। तो बोलती जो किसी को भी जो मृत्यु आती है, वो मृत्यु की वजह रहती है अपने कर्म, और उसके पीछे और भी उन्होंने रीजन बताई है कि जो अपना देश होता है, काल होता है और वर्तन होता है, यह तीनों चीजें किसी के भी मृत्यु के लिए कब आएगी इसके लिए कारणीभूत होता है।
तो बोलते हैं काल कैसे कारणीभूत होता है, तो बोलते हैं 4 टाइप के युग होते हैं, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इसकी वजह से जो काल होता है उसके अनुसार उसका जो टाइम फ्रेम होता है कि 400 साल, 300 साल, 200 साल और 100 साल, इस तरह की उम्र आपको काल के अनुसार मिलती है। लेकिन जगह के अनुसार और अपने वर्तन के अनुसार वो भी कम ज्यादा हो सकती है ना। तो हम लोग देखते काफी सारे लोग 100 साल के ऊपर भी जीते, काफी सारे लोग की मृत्यु पहले भी हो जाती है। तो ये बोलते तुम्हारा वर्तन भी यहाँ पे बहुत मैटर करता है। तो वर्तन कैसा, तो बोलते जो निषिद्ध स्वरूप के कर्म करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, फिर उनकी मृत्यु की आयु भी ठीक से वो पूरी तरह से इस जिंदगी को अच्छे से जी नहीं पाते। और जो अच्छे कर्म में रहते हैं उनका आयु भी होता है। दिन बोलते और एक चीज है, कर्म माने सिर्फ इस जन्म के प्राक्तन नहीं, इस जन्म के कर्म नहीं, इसमें वो संचित कर्म भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं किसी किसी की डेथ जो छोटे बच्चे होते तभी होते हो जाती है, किसी की यौवन में ही गुजर जाते, किसी किसी की डेथ जब बुढ़ापे में होती है। तो अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं ऐसा क्या हुआ, इसके क्या ऐसे कर्म थे, क्यों ऐसे इसको ये हुआ। तो बोलते नहीं, वो संचित कर्म भी होते हैं, वो भी वहां पे उनको इस प्रकार की डेथ हो जाती है। तो सारांश क्या है कि जो अपना मृत्यु होता है उसके लिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये तीनों चीजें मैटर करती है। देन यहाँ पे लीलावती और एक भी प्रश्न पूछती है, क्या सबको सेम अनुभव होता है, मरण यातना अगर होती है तो क्या सबको सेम होती है। तो यहाँ पे देवी जो बताती है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं अक्सर, जो मूर्ख मनुष्य होते हैं, जो कुछ करते नहीं अपने जीवन भर में, ऐसे ही लगे रहते हैं संसार की चीजों में, अपनी तरफ इधर ध्यान ही नहीं देते। देन दूसरे जो जो निधिभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं कंटिन्यूअसली, दे हैव अ प्रैक्टिस कि कैसे हम लोग ध्यान लगाया जाए, कैसे ये बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ के पार्थिवाहिक शरीर, सटल बॉडी का अनुभव लिया जाए, ध्यान किया जाए, कैसे अपने अंदर घुस जाए। ये सब जो अभ्यास निरंतर करते थे, मरण के वक्त भी उनको यही अभ्यास की वजह से उनको ये सब इतना पेनफुल होता नहीं है नो। लेकिन लोग होते सिद्ध होते तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, इस शरीर की जो यातना या ना यातना या सुख, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर परे ऑलरेडी अवे आउट ऑफ दिस, मुक्त होते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोलते जो दूसरा प्रकार का जो इंसान रहता है, मनुष्य जो रहता है, जो मूर्ख मनुष्य रहता है, जिसने कभी अपने ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दिया, कभी इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हुआ, कभी भी अध्यात्म की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी गुरु वैष्णव को नहीं सुना या नहीं इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में, तो बोलते फिर ऐसे व्यक्ति को मरते समय काफी सारी यातनाओं का अनुभव होता है। तो बोलते कि कैसे कितनी सारी अपने शरीर में नाड़ियां होती है, उसमें जो प्राण बसते हैं, तो क्या वो प्राण सारे उसके वक्त क्या होते, सारी नाड़ियों से निकलकर हृदय की तरफ आने लगते हैं। तो हजारों बिच्छू एक साथ यदि डंक मारे तो किस तरह की वेदना वेदना होती है, उस तरह की वेदना का वह मूर्ख मनुष्य अनुभव करता है। उसको वो अनुभव करता है तो फिर कहाँ से हरि का नाम याद आएगा, कहाँ से उस वक्त कुछ याद आएगा, उस वक्त तो कुछ नहीं याद आता। तो बोलते हैं इस तरह से वो सब होता है, फिर क्या होती है, धीरे धीरे उनकी वो मृत्यु भी हो जाती है। तो बोलते हैं कि जो अपने अस्तित्व के जो स्तर हमने देखे थे, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इन इसकी जैसे उत्पत्ति होती है 5 एलिमेंट्स, वैसे ही शरीर की भी जब उत्पत्ति होती है। तो यही सीक्वेंस यहाँ पे देखा गया है कि पहले तो आपका जो है आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट चला जाएगा, देन आपका फिर सेंस ऑफ टच चला जाएगा नो, देन फिर आपका फिर सेंस ऑफ टच चला, देन प्रकाश, सतत प्रकाश, सेंस ऑफ साइट चलेगी, कुछ दिखना बंद हो जाएगा। देन उसके बाद में जो आपका स्मेल है, वायु से रिलेटेड, तो आपका स्मेल भी चला जाएगा। देन आखिरी में आपका हियरिंग चला, साउंड जो है वो साउंड भी चला जाएगा। तो जिस तरह से उत्पत्ति होती है उसी तरह से मृत्यु का भी सीक्वेंस वैसे ही यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से वह उनका मृत्यु के समय ये सब होता है। इसलिए कही गई है जो मरणोपरांत जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं, वो प्रक्रियाओं का इसमें कैसे इम्पोर्टेंस है कि वो कुछ देर तक तो वो जो जीवात्मा रहता है वो होता है, तो वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाता है। तो इसलिए हम लोग वह सब कुछ ये करते हैं, उनके लिए वो सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट होती है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया। देन फिर बोलते मरणोपरांत, मरण के उपरांत क्या होता है। तो बोलते मरण के उपरांत जब होता है तो 6 प्रकार के लोग यहाँ पे बताए गए, सामान्य, मध्यम और जो महापुण्यवान रहते हैं, या जो सामान्य थोड़े इधर उधर के पापी रहते हैं,
बुरी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, मध्यम और जो महापापी रहते हैं। बोलते ये 6 प्रकार के जो लोग होते उसके अनुसार ही मरणोपरांत इनको फिर अपने जो सुख या दुख का अनुभव होता है। तो बोलते जो महापुण्यवान रहते हैं, जो बहुत अच्छा अपना साधना सेवा सत्संग ज्ञान अर्जित करने में अपने जीवन को बिताते हैं, तो उनको फिर वो स्वर्ग का अनुभव होता है। अपने ही इच्छा से वो स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं या अपनी इच्छा से अपना ब्रह्मांड बना लेते हैं और उसमें वो सुख का अनुभव लेते हैं। फिर उसके बाद में वही यक्ष या किन्नर इस तरह से योनि में चले जाते हैं, फिर वहां पे भी सुख को उपभोगते हैं। फिर ऐसे करते करते वो मनुष्य रूप को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ पे अच्छा सा उनको पुल भी मिल जाता है, अच्छे लोग सत्संगी भी मिल जाते हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। तो बोलते फिर दूसरे प्रकार के लोग, उनको फिर क्या होता है, थोड़ा वो सुख भी भोगते हैं, फिर उनको थोड़ा और योनि का भी थोड़ा बहुत ये भोगना पड़ता है, उनको भी मनुष्य जन्म मिल जाता है। जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि उनको भी थोड़ा इधर उधर का योनि में जाके उनको भी वो मिल जाता है। लेकिन मुझे पाप में जो इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उनकी तो बड़ी बुरी स्थिति होती है, उनको यह नरक यातना भुगतनी पड़ती है। उसके बाद में नरक यातना का अनुभव लेने के बाद भी उनको पत्थरों जैसा ऐसा बहुत खड़तर आयुष्य मिल जाता है, उसमें भी उनको रुकना पड़ता है कुछ देर, तो कुछ योनि में भी फिर थोड़े थोड़े करते करते बहुत सारे योनियों से गुजरते 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 ना उनको मनुष्य जन्म मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो बोलते कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य शरीर मनुष्य जन्म यदि मिला है तो उसको ऐसे व्यर्थ ना गमाओ ना, अपने साधना में सेवा में लग जाओ। गुरुदेव ने आज तो कितना सुंदर बताया ना कि भगवत गीता का भी आप पठन श्रवण मनन चिंतन निधिध्यास चालू करो, पढ़ो उसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुसुमताई है अपने साथ, तो हम लोग कुसुमताई से रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा एक टाइम फाइंड आउट करेंगे, रोज के 4-5 श्लोक लेके कुसुमताई के जो अभ्यास उन्होंने किया है उनके मुख से हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी और श्रवण भी करेंगे। लेट्स प्लान इट आउट प्रॉपर्ली कैसे होता है। गुरु का आदेश है, गुरु के आदेश पे चलना अपना कर्तव्य होता है। तो इस तरह से बताते हैं। फिर बोलते कि यह सबसे हमें सीखने को हमें क्या मिलता है, इस तरह की जो स्टोरी मिलती है इससे सीखने को मिलता है ना। फिर आगे चल के फिर लीलावती और प्रश्न पूछते जो एक महावाक्य है तत् त्वम असि, तो उसमें त्वम का मीनिंग क्या है। तो फिर वो अगला जो 9 चैप्टर भी खत्म होंगे, तो 10 चैप्टर जो लीलावती की 10वीं कहानी जो होगी उसमें हमें डिटेल में इसका वर्णन किया है, तो वो हम लोग कल लिखेंगे। तो आज के लिए अपना यह हिंदी का अनुवाद और हिंदी का सत्र यह भी यहीं पे समापन करते हैं। इसको आपके लिए खुला कर देते हैं। यदि आपके मन में आज जो कुछ भी हमने सुना उससे रिलेटेड आपके मन में कुछ प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, या यदि आप कुछ व्यक्त होना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दिस इज योर टाइम, ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन आपके लिए खुला कर दिया है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न नहीं है या किसी कुछ कहना नहीं है तो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। Yes. Yeah, it was beautifully explained by you, Someshwar ji. Very nicely you took us through that. And it's very clear actually about that. If anybody has a question, can ask. Otherwise, we are very clear about it. And with, Kusum Tai can take over for the next one. Yeah. मुझे कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो आई वुड लाइक टू चैंट भगवद गीता का श्लोक। प्लीज कुसुमताई थोड़ा अपना कैमरा एडजस्ट कर देंगे तो हम लोग आपको देख भी पाएंगे। तो आपको चलेगा ना चैंट करो तो? विल डू ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है, बिल्कुल जरूर आप कीजिए।
श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् मे प्रियो नरः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरये नमः भगवान गोपाल कृष्ण की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। ये गीता 12वां अध्याय। बोलो कन्हैया लाल की जय। Very nice, Kusumji. Very Wonderful. बहुत लग बहुत रहा था आप बोलते जाए हम सुनते जाए, आंखें बंद हो रही थी बिल्कुल। नहीं, आज का दिन भी कृष्ण का ही है ना, इसलिए मैं सोचा। बहुत बढ़िया। इट्स वेरी गुड कुसुमताई, थैंक यू सो मच। आपने ये ब्लेसिंग्स के रूप में हमें आशीर्वाद दिए, हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। गुरु ने भी बताया ना आज, तो देखो आपके रूप से वो फलित हो गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके,
किसी को कुछ कहना है? और अपने पास 4 मिनट है, फिर 9:30 को हम लोग ओके। वर्षा ताई कुछ कहना चाहती है क्या? आप बोलिए वर्षा। संगीताताई गुरुपूजा इतकी छान करतात, तर मी तर मेडिटेशन मध्ये जाते. तुम्ही पुन्हा कधी रेकॉर्डिंग आणि ते चालू करतात ते कळत नाही. खूप छान होते त्यांची पूजा. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. वी आर वेरी आणि ग्रेटफुल. आज गुरुजींनी आपल्याला लगेचच माणूस पण उपलब्ध व्हावा कुसुमताईंसारखा, आणि गीता पण ऐकायला मिळाले. म्हणले आजपासून किंवा उद्यापासून चालू करा, तर आजच चालू झाली. किती आपण भाग्यवान ना. खरंच आय अग्री विथ वर्षा. ते शब्द जे आहेत ना, ते हे नुसते शब्द नाही, न समजता हे मंत्र आहेत. आणि ते पण कृष्णाच्या मुखातून निघालेले आहेत, जो त्याचा इफेक्ट भरपूर आहे. अगदी बरोबर ताई, बरोबर आहे. फक्त शब्द नाहीये, मंत्र आहेत. आणि मंत्राचा खूप आपल्याला न मननात त्रायते इति मंत्र, जो मन को तर लेता है वही मंत्र है. तो वही एक्सपीरियंस संगीता जी बता रहे ना, इससे मुग्ध होते को भी म्हणजे हे मी शिकले, पहिली माझी मुलं शिकली आणि नंतर मी शिकले. हे विशेष. खूप भाग्यवान. मुलं बालसंस्कार केंद्रामध्ये शिकली, त्याच्यानंतर मला इच्छा झाली शिकायची. मग आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली, त्यांनी आम्हाला शिकवलं. अरे वा, खूप छान. थैंक यू सो मच. किसी को व्यक्त होना है जन्माष्टमी के अवसर पर, आप व्यक्त हो सकते हैं. ओके. जन्माष्टमीचं व्यक्त व्हायचं म्हणजे नुसतं यमुना हे जरी नाव काढलं ना, तरी असं आपण 5,000 वर्षापूर्वी तिथे होतो. आणि आज गुजरात आश्रमने ते एवढं दिव्य केलं. मागच्या वर्षी पण मी त्यांचं पाहिलं, जबरदस्तच करतात. म्हणजे असं वाटतं की आपण तिथे प्रत्यक्ष उपस्थितच आहोत. मी तर आज खूप खुश झाले. म्हणजे मागच्या वर्षी पण मी ते हे केलं होतं अटेंड. खरंच छान असतं. 56,000 बनवणं आणि एवढं हे काही सोपी गोष्ट नाहीये. ते 5,000 वर्षाचं सगळं अर्क आहे तो. खरंच छान. खरंच मला पण खूप छान वाटलं. मी तर टिपऱ्या वाजवल्या. मम्मा तो डान्स कर रही थी actually. I would like to add Gurudev's this, what he told us yesterday in Janmashtami. It's like मन को ठहराओ और शरीर को चलाओ. हम क्या कर रहे हैं? शरीर को ठहरा देते हैं और मन चलता रहता है, तो वो हमको घुमा देता है. That was a wonderful, beautiful point he said, And then ज्ञान के रस को बहने दो. Means when we are in the knowledge, so the shrot just goes on flowing. Let it flow. The minute it accumulates, it's gone. जमा किधर हो गया तो गया, तो बहने दो. Means if you have heard, you can pass it to someone you can lift them up also, in any ways. So help them out. So let this gyan knowledge keeps on flowing every time. That was very beautiful. So beautifully he said. And then he said, पन्ने किताब के पलटते रहो. That was so nice. कि किताब पढ़ते रहो, पन्ने पलटते रहो, नहीं तो बुद्धि पलट जाएगी. That was wonderful, amazing. So पन्ने पलट भी समझ में आए या ना, just have that faith you will get. गीता की किताब की तरह मत रखो भाई, पन्ने खोलो, पन्ने खोल के पढ़ो उसको, नहीं तो गुरुदेव पलट जाएंगे. My God, the way he answered and the way he gets it, from somewhere, I don't know, like it was so beautiful. But to be with him and to do it. आणखीन एक सांगितलं ना, तर ते सुद्धा मला खूप आवडलं. ते काय म्हणाले की 4 प्रकारची लोक येतात आणि त्याच्यात ते कुठं ते आहेत ते त्यांनी सांगितलं की ज्ञानी लोकांमध्ये मीच असतो स्वतः. अगदी बरोबर. वर्षाताई खूप मस्त. तो पण एक छान पॉइंट होता
है ना, कि मैं ही हूँ ज्ञानियों में, मैं ही बसा हूँ मैं। इसलिए वो सत्संग में भी ना हवेली में नहीं बोलते, मैं मेरे हृदय में हूँ। भजन भी चेंज कर दिया आज। मग आम्ही सोमेश्वर भैयांमध्ये गुरुजी बघतो, संगीता दीदींमध्ये बघतो, कुसुम ताईंमध्येही बघतो. हे सगळे एवढे म्हणजे ज्ञानी लोकांमध्ये शेवटी गुरुच आहेत. गुरु स्वरूपच आहेत सगळेजण. वर्षात तुम्ही पण गुरु स्वरूपच आहे. सगळेजण गुरु स्वरूपच आहेत, नो डाऊट. तुमच्यामध्येही तेच तत्व आहे. मग तेच समजून घेण्यासाठी योग वाशिष्ठ तर सगळा आपला चालू आहे, नाही का. सगळ्यांमध्ये एकच तत्व आहे, वेगळं नाही. तुमच्यामध्ये पण तेच गुरु तत्व आहे, आम्ही पण तुमच्यामध्ये तेच गुरु बघतो. सो विद दैट ब्यूटीफुल नोट आज का यह सत्र हम लोग यही समापन करते हैं. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. बाय सर. जय गुरु.